So if you're someone who is looking to prepare for internal audit interviews, this video is really important for you. Because in this video, I'm going to be covering what are the most important and frequently asked questions which are there. Also, I'm going to be giving you a reading material at the end of a video out. So request you to please watch this video till end. And if you have not subscribed my channel till now regarding for preparation related to interview training and placements, please do the same. Before I move forward, just also a small update. I have created a very good community for you guys where I am posting a lot of vacancies every day. So if you don't want to miss out any of the vacancies out, do check the link in the description for finance job community and other important links which are there. Now let us start with very important discussion regarding internal audit. Now if you see it out, right, internal audit is something which is applicable as per section 138 of a Companies Act 2013. And many a times when you're going for an interview, they will be asking you what is internal audit according to you, right? Now, according to me, this is a definition what I generally prefer, and I'm going to be explaining you by showing a real life internal audit report. मैं आपको एक ऐसे एक internal audit report भी दिखाऊंगा, right? So that you get a better understanding for the same. But according to me, what is internal audit? Internal audit talks about three important words: process, risk, and control. Right? If you are able to say these three important words in interview, definitely interview will be really impressed. Now, why it is really important for you guys to understand the process? So, what is internal audit? It talks about what is a process, what are the risks involved in the process, and what are the controls addressing those risks. ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी when you are going for and setting in an interview. Now, what we do as an internal auditor is we understand the process, right? So lot of interview questions will be asked you regarding the multiple processes which are there. Sir, what are the most important internal audit processes which are there? I've listed down few of the processes. Of course, there can be other processes as well. Now, P2P and O2C, that is procure to pay, that is a purchase side, and O2C is order to cash, which is a sales side, right? Also known as revenue to receipt. This is one of the core and the heart of an internal audit, to be honest. सबसे ज्यादा यही होता है. देखो, एक होता है परचेस, एक होता है सेल. अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख रहे हो तो एक परचेस का प्रोसेस और एक सेल का प्रोसेस. हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू रिगार्डिंग द सेम, right? Of course, I'm going to be giving you a short brief regarding this process, right, at the end of a video. Then you have H2R, hire to retire. FSCP is financial statement closure procedures. FA is fixed assets. Then we have inventory and cash assets and cash payment. Now, before I move forward, you being an internal auditor, what is your role? You go into a company and understand the process. So they'll ask you a question related to the process which is there. कि आप बताओ कि ये process में क्या control failure आपको लग रहा है, right? Or what could go wrong in this process which is there? What are the risks which you are able to find out in this process which is there? Let's take a very simple example. Say for example, there is a process which is related to, or what will happen if this process is not followed. जैसे कि how would you avoid a double payment to a vendor? इसके लिए क्या process आप setup करोगे? इस तरीके के questions they'll ask you. So then you will say that, sir, we'll ensure that the maker checker is there, or we'll ensure that the BRS is prepared regularly. So what you're doing, for what could go wrong, I'm mapping out the processes which is there. Now you being an internal auditor, you will be asked question related to process, risk and control. Now let me just show you a small internal audit report so that you get a better glance and you have a better clarity on how the things works in a real world, right? तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ. तो when you're going to be joining an internal audit, काफी बार आपको यही काम करवाया जाएगा. We'll be preparing this type of internal audit report where you're going to be giving a brief about the things you're going to be working on. This is really important where you're going to be working on a risk grading where you will use your concept of a materiality. आप materiality का concept use करके एक risk grading बनाओगे, high, medium and low, which is there. एंड देन पैरेलली यू प्रिपेयर अ समरी कि जो जो आपने प्रोसेसेस देखी है कि से फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स वर नॉट फाउंड इन द एरियाज वेयर दे मेंशन इन अ फिक्स एसेट रजिस्टर. अब ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है एंड द रिस्क रेटिंग इज हाई. अगेन यू हैव डिसाइडेड आउट बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी. इट कैन बी एनीथिंग. यू हैव टू गिव कि आई हैव डिसाइडेड 10% ओवर अ टर्नओवर इज हाई, 5 to 10% is moderate, and below that is of course low. Okay, so I've thus mentioned this process, and for every process whatever I'm going to be working on, right, I'll be just writing my detailed observation. तो मैंने लिखा कि on 1/4/2022 on fixed asset verification of 7 assets were not found where they were mentioned in the fixed asset register amounting to the 7 crore rupees. Now, what is differentiation between audit and internal audit? Many times they might ask you what is the difference between stat and internal. तो आपको बोलते आना चाहिए, right? बिकॉज इंटरनल ऑडिट में आप प्रोसेस समझ रहे हो, प्रोसेस पे ऑब्जर्वेशन दे रहे हो. देखो स्टार्ट ऑडिटर अपना ओपिनियन देके निकल जाता है, बट व्हेन यू आर इनटू एन इंटरनल ऑडिट you take a management explanation plus you also give your recommendation. So this is one of the very good factor which is there in internal audit, not there in other domains,
राइट. तो यू गिव एक्सप्लेनेशन दैट. आप मैनेजमेंट को पूछा कि भाई असेट कहाँ है, तो मैनेजमेंट गिव एन एक्सप्लेनेशन दैट द फिक्स असेट बेयर आईडी बियरिंग 315 and 4 वर डिस्पोज ऑफ हो गए. ठीक है. नाउ व्हाट यू डिड, यू गिव अ रिस्क. क्या रिस्क है? पोटेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट होने का रिस्क है. एंड रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट नीड टू डिजाइन अ प्रॉपर सिस्टम एंड अ प्रोसेस एज टू डिस्पोजल एंड सेफगार्ड ऑफ एसेट. तो मैनेजमेंट को एक प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर बनाना चाहिए. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग एन ऑब्जर्वेशन, टेकिंग अ मैनेजमेंट रिकमेंडेशन, मैपिंग द रिस्क एंड गिविंग द रिकमेंडेशन व्हिच इज देयर. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, right? If you take our masterclass, if you check the link in the description, in masterclass which we have made, we have taught everything in a practical manner. ये सब चीजें बहुत शानदार तरीके से हमारे मेंटर ने सिखाई है, तो आपको मजा आ जाएगा. अगर प्रैक्टिकली सीखोगे तो मजा आएगा. Before going for any of the interview, I would highly recommend you to watch the things on a practical manner. Right? Given a time constraint and things out, I'm just trying my best to cover whatever is possible. तो ऐसे अब काफी सारी प्रोसेसेस करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स ही होगा, be mapping the same, right? You're giving the recommendations and all, and at the end, what is the limitations in the process which is there. ओके. तो ये सब चीजें आप करोगे. अगेन कमिंग बैक टू अ डिस्कशन व्हाट आई वाज डिस्कसिंग फॉर, तो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आ जाएगी P2P, O2C, हायर टू रिटायर, FSCP, फिक्स एसेट्स, इन्वेंटरी, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, राइट, व्हिच इज देयर. Now I'll be explaining you one or two process which is P2P and O2C in very short, right, at the end of a video, so that you get a better clarity on the same. Now what can be a possible interview questions which is there? They might ask you some questions related to the line of defense. So internal audit is a third line of defense, right? तो बाकी के दो I have mentioned it out. The internal audit is the third line of defense. I've mentioned it out. They'll ask you defense in start and internal. Explain the process and the techniques to identify over and under valuation of a sales, purchase and inventory. Or how would you, जैसे इसमें क्या होता है, many of you those who are targeting internal audit might be targeting our forensic audit as well, right? तो क्या होता है, when you are going into the forensic is all about a fraud identification and detection. तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ what could company do to overvalue or undervalue their assets, or what could company would do to increase and inflate their sales. So they'll ask you the questions related to this, so that we want to check that कि आप कितना mindset चल रहा है, are you thinking from a control perspective, organization perspective से आप सोच पाते हो कि नहीं. ठीक है, that is that. जैसे कि एक favorite question है which they generally ask, how do you identify a ghost employee. ये आपको बहुत बार पूछा जाएगा when you're going for internal audit interview. Ghost means fake employee. एक fake employee कैसे ढूंढोगे आप, right? So you should be smart enough to give the answer, right? इस पे I've prepared a very detailed and very nice case study for you guys on my YouTube channel. जस्ट चेक इट आउट. बहुत शानदार तरीके से मैंने प्रैक्टिकली सिखाई है कि गोस्ट एम्प्लॉय को कैसे ढूंढता है. बट जस्ट गिविंग इट अ शॉर्ट. आप बायोमेट्रिक्स रिपोर्ट देखोगे, आप उसके ईमेल सेंड बॉक्स देखोगे. ये जनरली पीपल फॉरगेट टू टेल इट आउट. ईमेल सेंड बॉक्स, आई एम टेलिंग समथिंग व्हिच इज एक्सेप्शनल, राइट. देन यू टेक अटेंडेंस रिकॉर्ड पूरा एंड टू एंड व्हिच इज देयर, राइट. देन यू सी द हायरार्की, कौन है उसका सीनियर, कौन है मैनेजर, कौन है, राइट. आप आधार और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करोगे कि क्या उस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ था कि नहीं. तो ऑल दिस थिंग्स बेसिक चेक व्हिच इज देयर व्हिच यू हैव टू आंसर इट. वेरी डिटेल्ड वीडियो आई हैव क्रिएटेड इट इन द YouTube, plus check the I button. I'll just put it out there as well. Then explain the procedures and technique to identify. मैंने बता दिया. Tell me your 3 favorite observations. Yes, this is again one of the very interesting question which is going to be asked you in many of the internal audit interviews. They'll ask you to tell me your favorite observations which you have got it out when you are doing an internal audit. कि आपने क्या क्या observations देखे. जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था ना कि फिक्स असेट्स वर ओवर वैल्यूड, राइट. थिंग्स वर नॉट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, नहीं रख रहे हैं, मेकर शेकर नहीं है, राइट. तो ऐसे जो भी आपके अच्छे अच्छे जो ऑब्जर्वेशंस है व्हिच यू हैव डन इट आउट, यू हैव टू जस्ट मेंशन इट. फॉर एक्सपीरियंस, अगर फ्रेशर हो तो आपको इतना ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं करा जाएगा. देन गिव सम एग्जांपल ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग इन कंट्रोल. तो वेरी गुड एग्जांपल है कि डबल पेमेंट का हो सकता है. देन देयर कैन बी अदर ग्रेट एग्जांपल्स लाइक, कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि डबल सेल्स एंट्रीज रिकॉर्डेड, और डबल कुछ भी आप ले सकते हो. जैसे यू टेक अ P&L एंड बैलेंस शीट एंड देन यू सी इट आउट. ठीक है, तो वॉट एवर थिंग्स विच इज देयर. एंड जनरली वट आई हैव सीन इट आउट, जो भी फ्रॉड ज्यादा होते हैं वो परचेज साइड होते हैं, प्रोक्योरमेंट साइड होते हैं, राइट. विच इज देयर अ 3-way मैच और नॉट, राइट. अब व्हाट कुड गो रॉन्ग क्या हो सकता है, द गुड्स शोन इन द मटेरियल आर दे फिजिकली एग्जिस्टिंग और नॉट, राइट. ये व्हाट कुड गो रॉन्ग हो सकता है कि आर द फिजिकल इन्वेंटरीज विच आर देयर विद द कंपनी, डू दे हैव फिजिकली और नॉट. मतलब द इन्वेंटरी शोन इन द बुक्स इज रिकंसाइलिंग विद द इन्वेंटरी विच इज देयर एट द वेयर हाउस और प्लांट विच इज देयर. तो ये सब आप व्हाट कुड गो रॉन्ग हो सकते हैं. अब उसके लिए कंट्रोल क्या होगा, रेगुलर फ्रीक्वेंटली इन्वेंटरी काउंट इज डन बाय द कंपनी. तो दिस कुड बी अ कंट्रोल विच इज देयर. So many a times company will also ask you to prepare an RCM which is there. Just give me a second. Let me also show you one of the RCM के. RCM दिखता कैसे and काफी time you are going to be preparing it out. What is RCM? Risk control matrix which is there. So this is how the typical RCM looks like. तो ये आपको एक RCM दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे which is there, जहाँ पे, so this is what you have seen it out in your internal audit report only, right? ये जैसे policies and purchases जो है, फिर what could go wrong,
राइट, इनएडिक्वेट और डिलेड प्लानिंग हो गया। देन कंट्रोल्स क्या मैप किया कंपनी ने, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इट इज देयर, व्हाट इज द रिस्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेस्टिंग, व्हाट इज द कंट्रोल टाइप, मैनुअल और ऑटोमेटेड, राइट। तो ये आपको इंटरनल ऑडिट में करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट इज देयर एंड दिस इज व्हाट वी टीच इट इन आवर मास्टर क्लास ओनली। तो दैट इज व्हाट आर एम एंड परसेप्शन टू हेल्प यू आउट एंड लर्न द थिंग्स प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आरसीएम्स, हैव यू प्रिपेयर्ड इट आउट, इफ नॉट देन इट्स फाइन। Then how do you identify fake employer, ghost employer? This I've already covered. Socks ke regarding, they'll also ask you some great questions to prepare things related to the socks which is there, right? Then they'll ask you some case study based questions जैसे how do you find a fraud in reimbursement expenses, right? कि आप कैसे fraud ढूंढोगे, ठीक है, या क्या fraud हो सकता है, और what could be a great policy for a reimbursement, ठीक है। आप बताइए कि कंपनी को क्या प्रोसेस सेटअप करना चाहिए फॉर रियम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड्स कैन बी हैपन, राइट, विच इज देयर। तो इसमें आप डेफिनेटली यू टू सी कि ऑथराइजेशन मैट्रिक्स क्या है, व्हाट डज ऑथराइजेशन मैट्रिक्स है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द जार्गन वर्ड्स रिलेटेड टू दिस, इफ यू यूज दिस इन इंटरव्यू इट विल गिव यू एन एज। सर विल चेक कि ऑथराइजेशन मैट्रिक्स के हिसाब से है कि नहीं, देन जो सीनियर है वो अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं इसको, राइट, विच इज देयर। एवरी बिल इज अटैच्ड विद द ओरिजिनल प्रूफ, whatever the proof which is there is attached to the same, right? तो ये सब basic parameters है which you have to check. Risk grading which I have shown high, moderate and low, अभी जो आपको दिखा रहा था color wise, that is there. Then they'll ask you some suggestions जैसे कि fixed assets were not found where they were mentioned in the register. Then again the one which I showed you the case study, तो वो उस तरीके के आपको case study based ज़्यादा पूछेंगे, but the major focus is on this, right, the purchase and sale side which is there. So let us understand in a short how does this things works. Now few basic terms they'll be focusing on is purchase requisition and purchase order. Requisition मतलब होता है रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट डाल रहा है कि वी वांट दिस मच फोन्स। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, say for example let's take a company called as a Reliance. तो Reliance CFO decides to gift an iPhone to every employee above manager level, कि सबको जो भी मैनेजर के ऊपर है उन सबको एम्प्लॉई को हम आईफोन देंगे। एक परचेस रिक्विजिशन रिक्वेस्ट किया कि चलो सबको आईफोन दे दो, दैट इज परचेस रिक्विजिशन। और जो एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस होगा दैट इज परचेस ऑर्डर। तो दे विल आस्क यू दिस डिफरेंशिएशन व्हिच इज देयर। एंड जीआरएन मतलब जो आईफोन आएंगे, गुड्स रिसीट नोट व्हिच इज देयर, एंड इनवॉइस एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ, ठीक है। देन बिल ऑफ मटेरियल, थ्री वे मैचेस, इनवॉइस, पीओ, जीआरएम, यू आर चेकिंग द क्वांटिटीज व्हिच इज देयर। नाउ हाउ डज द परचेस प्रोसेस गो? वेरी सिंपल, मैंने डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड दैट टू गिव, आई वांट टू गिफ्ट एन आईफोन टू एवरीवन, तो दैट इज अ परचेस रिक्विजिशन। मैंने रिक्वेस्ट डाला, राइट। आफ्टर द रिक्वेजिशन डालूंगा, मैं बोलूंगा कि चलो यार सबको आईफोन गिफ्ट करना है, आईफोन गिफ्ट करना है। आईफोन गिफ्ट डिसाइड करने के बाद एक क्या होगा, रिव्यू होगा कि हाँ चलो अब सबको आईफोन देते हैं। दिस इज व्हाट अ रिव्यू इज गोना बी हैपनिंग इन। चलो नहीं नहीं इस मैनेजर को नहीं देना, काम नहीं करता, तो ये क्या हो रहा है, परचेस रिक्विजिशन रिव्यू। आफ्टर दिस इज डन, राइट, विल चूज द वेंडर कि किससे आईफोन बुलाना है, वेदर टू ऑर्डर फ्रॉम अमेजॉन और वी हैव टू हायर इट और गेट इट आउट फ्रॉम सम लोकल वेंडर्स। तो ये क्या हो गया, वेंडर सिलेक्शन। देन वी विल ऑब्टेन अ कोटेशन, चलो कौन सस्ता दे रहा है देखते देखते। इसमें भी पूछेगा व्हाट आर द पैरामीटर्स यू विल यूज टू सिलेक्ट द कोटेशन व्हिच इज देयर, राइट। काफी लोग बोलते हैं कि सर अमाउंट, अमाउंट वन ऑफ द पैरामीटर है बेटा, इसके अलावा एक्सपीरियंस हो गया, राइट, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, कि उसका टर्नओवर क्या है, कितने क्लाइंट्स के साथ डील करता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू सी इट आउट, ठीक है। Then we'll evaluate the contract which is there. After that is done, we'll place the order, right, हम उसको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट, राइट, वेरीफाइड फ्रॉम द पीओ, उसको ऑर्डर दे देंगे, वेंडर एक्सेप्ट्स अ पीओ एंड एक्नॉलेजेस इट। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम उसको पीओ देंगे कि भैया हमें इतने फोन चाहिए, राइट, परचेस ऑर्डर दे दिया। आफ्टर दैट इज डन, इनवॉइस अप्रूवल जो भी रहेगा वो हो जाएगा, देन पेमेंट, राइट। तो इनवॉइस अप्रूवल आ गया, गुड्स आ गया, विल मैच इट आउट, मैचिंग बिटवीन जीआरएन, इनवॉइसेस एंड पीओ, एंड देन विल मेक द पेमेंट टू द वेंडर विच इज दैट। तो इस तरीके से एक पूरा परचेस का प्रोसेस हो गया, ओके। सिमिलरली, राइट, सेल्स का प्रोसेस विच इज देयर, तो द नोट्स विच आई एम शोइंग ये स्टार्ट ऑडिट के नोट्स में भी डाला हुआ है, इंटरनल में भी डाला हुआ है, राइट। एनी नोट्स विच यू वांट टू डाउनलोड इट आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट, आई विल जस्ट टेल यू आउट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सो दैट यू डोंट मेस अप, राइट। अगर आपको कुछ भी चीज़ें देखनी होगी या करनी होगी, राइट, जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ, आई विल जस्ट शो इट टू यू, राइट। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आपको जाना है आपकी फेवरेट वेबसाइट पे, विच वेबसाइट सर, cmong.com, राइट। वंस यू आर हियर इन आर वेबसाइट, है ना, जैसे आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि मास्टर क्लास सेक्शन, राइट। यहाँ पे आपको इंटरनल ऑडिट दिख रहा है, बाकी सारी भी मास्टर क्लासेस अदर्स आर अवेलेबल, क्लिक हियर, वंस यू क्लिक हियर आउट, राइट, आपको काफ़ी सारी मास्टर क्लासेस मिल जाएगी, वे हैव टॉट थिंग्स ऑन अ प्रैक्टिकल मैनर, बहुत शानदार तरीके से सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखाई गई है। That is one. You click it out. You see what all things are there, right? And mentors have prepared it in a very nice way. You love it out, which is there. After this is done, you can also download some of the free resources, right? काफी सारे reading materials and stuff is uploaded here. So go and practice it out. That is second.
Third great thing which you have done, whenever you feel bored, you want to prepare for your interviews, right? Do not hesitate to do that. Go to the practice section, AI bot. Once you're here, start practicing with the AI bot which is there. Suppose you are preparing for internal audit, अपने दीदी भैया दोस्त भाई को भी बोल सकते हो, राइट? तो मेरे को इंटरनल ऑडिट का मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करना है. इफ यू फ्रेशर अपना सीवी है तो डालिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए. एंड वंस दैट इज डन, यू कैन प्रैक्टिस विद दिस बॉट. द बॉट इज गोना बी आस्किंग यू टेक्निकल क्वेश्चंस. इसके अलावा यू कैन प्रैक्टिस अ टेक्निकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जो भी आपको करना है, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस आउट. वी हैव बिल्ड इट आउट इन अ वेरी नाइस वे गाइस. ठीक है, अपने करियर को स्टेक में मत लाइए. प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड इट्स ऑल अबाउट मनी. पैसे के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज एवरीबडी हैज अ ड्रीम दैट दे शुड अर्न वेल, राइट? तो प्लीज इन्वेस्ट इन योर करियर गाइस. दिस इज गोना बी गिविंग यू एन नंबर ऑफ रिटर्न व्हिच इज देयर. सेकेंड प्रोसेस इज ऑर्डर टू कैश, राइट, विच इज देयर. इट्स मोर ऑफ अ सेल्स प्रोसेस. तो मैं अगर जब कोई सेल करता हूँ तो कैसा होगा, ठीक है? तो अगेन ऑर्डर मैनेजमेंट होगा, फिर क्रेडिट मैनेजमेंट होगा, राइट? ऑर्डर फुलफिलमेंट. देखो क्या होता है, सिंपल. कोई भी कस्टमर आपको आपसे क्यों खरीदेगा? ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल देम आउट कि भाई देखो, दिस इज माय कोटेशन, दिस इज माय प्राइस, दिस इज व्हाट आर क्रेडिट टर्म व्हिच इज देयर. तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट बिगिंस एज द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर. मुझे ऑर्डर आएगा, बट ऑर्डर के पहले आई हैव टू गिव देम द बेस्ट प्राइसिंग व्हिच इज देयर. देन अगेन वी हैव टू डिस्कस व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस शुड ऑटोमेटिकली थ्रू द क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस. तो वो हमको देखना पड़ेगा. ऑल्सो नीड टू चेक इट आउट कि क्या मेरे को प्रॉपर टाइम में वो हो रहा है कि नहीं, राइट? इसमें मैंने दो प्रोसेसेस लिखे हैं, दोनों लिखे हैं, तो यू कैन जस्ट सी इट आउट. ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, इनवॉइसिंग, then account receivable, payment processing, cash application. Okay, so that is there. You just go through it, you read it out, you'll get a better understanding of this processes which is there. It is going to be giving you the very great thing. Now one of the great thing which I've done, I've created a question bank for internal audit. इसका link आपको description में मिल जाएगा, right? Just check through it and you can also parallelly refer to the start audit का process वाले notes which I've just shown you. ये जो मैं दिखा रहा था start audit के process notes में you'll get it. This is something you'll easily get it out in internal audit. The frequently asked 109 questions which is there in internal audits, I've just given it to you. Just have a glance for the same. I'll be happy if you watch the things on a practically, which is on our website, right? Masterclass देखोगे तो आपको अच्छा exposure मिलेगा. But if you don't have a time and you want to do it early, then check it out. ठीक है, तो guys, wish you all the best for your interviews which is there, and do let me know for which other domains you want me to prepare a video out, and don't forget to share this video for your friends, those who are preparing for internal audit interview. Bye bye.